हम शांति। ये 26 दिसंबर 2021 की मुरली के ऊपर कुछ विचार हैं। आज हम रिपीट कर रहे हैं 17 दिसंबर 1989 की मुरली। हम इस 2 सप्ताह के अंदर भी बाबा से कई पॉइंट्स ऐसे सुनते आ रहे हैं कि कैसे हम बच्चे सीढ़ी उतरते रहते हैं हर जन्म में। आपको याद होगा पूर्व सप्ताह बाबा ने पुरुषोत्तम के ऊपर मुरली चलाई थी। उसमें बाबा मिसाल दे रहा था कि कलयुग में पुरुषोत्तम बनना है तो अभी एजुकेशन से बन सकते हैं। कोई साधारण है परंतु एजुकेशन से क्लर्क जस्टिस बनता है, तो सारा उनका जीवन साधारण से पुरुषोत्तम समाज के भेंट में वो बनता है। और कल्प के भेंट में, कल्प के हिसाब में तो देवता सर्व पुरुषों में उत्तम है। तो पुरुषोत्तम अभी बाबा की मुरली के एजुकेशन से आप बन सकते हो। तो फिर 2 दिन पहले भी शिव बाबा हम सब से पूछ रहा था कि बच्चे, मैंने तुमको इतना दिया था, इतना खजाना, सर्व प्राप्ति संपन्न, पुरुषोत्तम बनाया था, वो सब कहाँ गया? तो हम क्या जवाब देंगे बाबा को? हमारी अभी कलयुगांत की हालत और सतयुग आदि की हालत में कितनी फर्क है। तो ये अंतर जो है, इससे हमें सारा ज्ञान स्पष्ट होता है कि बाबा क्यों हमसे साधना कराता है। तो आज बाबा ये जवाब दे रहा है कि ये सब खजाना, सब प्राप्तियां कहाँ गई? हम क्यों ऊपर से नीचे आ गए हैं? तो बाबा समझा रहा है कि मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन, जितना हम व्यर्थ गवाएंगे तो आत्मा की जो समर्थि है वो कम होती जाती है। तो कल्प के शुरुआत में हम सब समर्थ थे और अभी कल्प के अंत में हम कमजोर आत्मा बन गए हैं। देखो, साधारण मिसाल भी, यदि कोई अपना समय को यूज करता है, बच्चा है और अच्छी तरफ से पढ़ता है, अपना समय व्यर्थ नहीं गवाता है और जो एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी है वो फुल यूज करता है, तो इससे वो बनेगा ना, उनमें समर्थी आएंगी उस एजुकेशन की, उस क्वालिफिकेशन की। तो हर समर्थी आती है जब कोई भी खजाना हम बहुत अच्छी तरह से सफल करते हैं, और कमजोरी आती है जब हम उसको व्यर्थ के तरफ लगाते हैं। कोई बिजनेस चलाते हैं और जो भी प्रॉफिट्स हैं वो प्रॉफिट्स इन्वेस्ट करता है, बिजनेस को फिर बढ़ाता है, स्ट्रांग बनाता जाता है, तो वो बिजनेस में समर्थी आएंगे ना। और यदि किसी का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जिसका जो ओवरहेड्स है, एक्स्ट्रा कॉस्टिंग है, वो कहाँ
व्यर्थ जा रहा है, एक्स्ट्रा जा रहा है, तो फिर बिजनेस की सामर्थ्य कम होंगी ना। तो हर बात में वास्तव में व्यर्थ हमें कमज़ोर बना देती है। तो लौकिक दुनिया में देवान में समर्थी माना, संपत्ति, पोजीशन, फैमिली, ये सभी बातों पर, रेप्यूटेशन, इन सभी बातों पर समर्थी। परंतु आप देखेंगे, आपका अनुभव भी होगा कि ये सब कुछ होते अंदर मन में व्यर्थ चलता ही रहता है। बाबा की जो पढ़ाई है वो हमें अंदर भी समर्थ बना देता है। कैसे हम मन, बुद्धि, संस्कार के ऊपर राजा फिर से बन सकते हैं। तो आत्मा की समर्थी केवल बाहर की समर्थी के आधार पर नहीं होती है। तो हमें रियली अंदर समर्थ आत्मा बनना है। तो बाबा पहले समझा रहा है कि व्यर्थ को समाप्त करते चलो। हम सबका स्लोगन भी है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो इसका मतलब निकलता है कि हम मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन, जहाँ व्यर्थ जा रहा है उसको समर्थ में परिवर्तन करना, उसको स्व परिवर्तन कहाँ कहते हैं। चाहे व्यर्थ दृष्टि है, व्यर्थ सुनना है, व्यर्थ बोलना है, व्यर्थ समय है, जहाँ है हम चेक करके चेंज कर लेवे और व्यर्थ से समर्थ में परिवर्तन कर लेवे। दूसरी बात, हम सब जानते हैं कि 63 जन्म का पाप का बोझा है। बाबा याद दिलवाता रहता है कि बच्चे अपना चार्ट को बढ़ाते चलो, क्योंकि बोझ है 63 जन्म का, उसको जब तक नहीं उतारेंगे तब तक आत्मा में पंख नहीं आ सकती है। आप वापस परम धाम उड़ नहीं सकेंगे। तो बाबा आज हमें एक्स्ट्रा राज सुना रहा है कि ब्राह्मण बनने के बाद भी अविज्ञा का बोझ चढ़ता है। जहाँ भी हम बाबा की श्रीमत की अविज्ञा करते हैं उसका भी बोझ चढ़ता है। तो ब्राह्मणों के लिए पाप वो है, हम दूसरी कलयुगी आत्माओं के पाप के हिसाब से भेंट नहीं किया जाता है। हम ब्राह्मणों के पाप सूक्ष्म जास्ती होते हैं। तो हमारा पुण्य भी अलग होता है। लौकिक दुनिया की पुण्य अलग होती है। और बाबा समझा रहा है कि मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन, जो आपने श्रीमत अनुसार लगाया है, किया है, वो है पुण्य। और आप सब जानते हो कि राजयोग कोई ऐसे विधि नहीं है, ऐसे कोई एक्सरसाइज नहीं है, टेक्निक नहीं है, लेकिन राजयोग माना संबंध। तो आप जब श्रीमत, बाप के कदम में आपका कदम, आपके साजन के कदम में आपका कदम, चाहे मनसा वाचा कर्मणा, चाहे तन मन धन, सब में कदम आप जब रखते हो श्रीमत अनुसार, तो फिर परमात्म दुआएं आपको स्वतः ही मिलता है, क्योंकि आप अपना संबंध को निभा रहे हो। तो फिर वो दुआएं आपको उड़ती कला में लाता है।
तो आपका अनुभव होता है हल्कापन का, आप आगे बढ़ते हो, सफलता भी मिलती है। और जब हम कोई ना कोई अवज्ञा करते हैं तो मेहनत ज़्यादा और सफलता कम मिलती है, क्योंकि परमात्मा दुआएं नहीं इसमें। तो ये अवज्ञा बड़ी भी हो सकती है, समझो पवित्रता का टूट गया, और छोटी भी हो सकती है, समझो दुख ले लिया। परंतु जो भी अवज्ञा किया, परमात्म दुआएं नहीं मिलेंगी तो हम भारे जरूर होंगे। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं आप इसका भी परिवर्तन करेंगे तो व्यर्थ समाप्त और आज्ञाकारी, इन दोनों बातों से हम फिर से समर्थात्मा बन सकते हैं। और तीसरी बात बाबा सिखा रहा है कि आप मालिक सो बालक का ड्रिल अपना जैसे स्वभाव बनाओ कि विचार देने के समय आप मालिक होकर के दो, और जब डिसीजन फाइनल हो गया आप बालक होकर के फॉलो करो। तो ये बैलेंस आप अपनाएंगे तो आप भी खुश रह सकेंगे और दूसरों को भी खुश कर सकेंगे। तो इससे भी सफलता, तो निर्व्यर्थ, आज्ञाकारीपन और मालिक सो बालक। और आज का वरदान भी उस पर है कि कैसे हमें अपने को बिजी रखना है, निर्व्यर्थ बनना है। ओम शांति। Om Shanti. These are some thoughts on the Murli of the 26th of December 2021. Today we're repeating the Murli of the 17th of December 1989. You'll recall in the last 2 weeks we've had a couple of Murlis on our journey down the staircase of rebirth. Last week Baba spoke to us on the topic of Purushottam, the most elevated among human beings. And Baba was giving the example that in the Iron Age you can become a relatively elevated person through education. Someone who is from an ordinary background, through their education they can become a clerk, they could become a chief justice, so they can elevate themselves. And as far as the cycle is concerned, the most elevated among humans are the deities. And Shiv Baba is providing us an education through the Murli. And it's through that education that we become the most elevated, relatively, among all human beings. And then a couple of days ago, Shiv Baba was asking us in the Murli that children, where is all of the attainment that I gave you? I made you so wealthy, I made you so powerful. What happened to it all? Now what answer do we give Baba? Well, today Baba is answering it for us. That the reason that we continue to come down the staircase is because we waste our treasures. Whether it's body, specialities, wealth, whether it's thoughts, words and actions, we use it in one or another way where it's wasting. Of course, a lot of our cycle goes into trying to please people and fulfill relationships, please ourselves, doing bhakti.
And some of it would have even been used for vices, for very negative karma too. So we can see from the picture of the staircase our journey. Step by step we keep coming down. We started off the cycle as powerful souls and powerful people. Internally powerful, externally powerful. And we end the cycle as weak, both internally and also externally. We're all very vulnerable in one way or another. And Baba is asking us why. And today Baba is answering, because of waste. You have many births of wasting body, specialities, wealth, thoughts, words and actions. And it makes you heavy and it makes you weak. Even in everyday examples, we can see that it's actually waste that would weaken us. For example, if a student is studying a course and uses their time in a worthwhile way and is focused, they're more likely to do well. And then that education and that qualification gives them a power. They have empowered themselves by using their time in a worthwhile way. If that same student wastes their time, they don't do as well, they might even fail, then they're not as powerful. And so that waste has caused that weakness. If one looks at the example of a business, you're running a business or even running a home, then where are your wasted expenditures? Where is the money going? What are the overheads? You have to analyze this, because your profits can all be wasted away if your overheads are very high. And if someone is efficient, and if someone is good at investing their profits, then they can have a very solid foundation for growing their business. So it's actually wastage that makes us weak in everything. And it's making sure that we eliminate that wastage that makes us strong. So Baba is saying that this is what you children need to do. You need to keep your mind and intellect busy. Use your time in a worthwhile way. And as you do that, you'll become stronger. Your slogan is world transformation through self-transformation. And that self-transformation means to transform wasteful body, specialities and wealth. That means wasteful usage of body, specialities and wealth, thoughts, words and actions, and transforming them to becoming powerful usage. And as we transform them into power, we will become powerful. Secondly, we're very well aware from the Murlis that we have 63 births of the burden of sin on our heads. And Baba keeps drawing our attention to increasing our chart of remembrance. Baba explains to us that as long as you have this burden of past births,
The soul can't develop wings to fly up to the soul world. And today Baba is making us aware that after becoming Brahmins, we can also accumulate the burden of disobeying Baba. We know the Murlis very well, and wherever we're not following them, there's a burden that accumulates there. And that burden can hold us back. As we all know, Baba's Srimat is all geared to making us powerful. Srimat is basically transforming waste into power. And wherever we're not following it, we might be using another vice, we might be using things in another way. That's going to make us weak. If we're using the vices, then we're also creating karmic accounts. We know that. We're strengthening the vices. Also, we are aware that Raj Yoga is not just a technique, but Raj Yoga is my relationship with Shiv Baba. So whether it's as his child, whether it's as his beloved, both of them require a level of obedience. We say, follow the footsteps of your father. And in marriage ceremonies, in several cultures, they have this oath of obedience. And this is a memorial of this time. So they might have a ceremony where the wife follows in a circle around in the husband's footsteps, or other such types of ceremonies. And Baba is saying that now you've got your beloved, this beloved of the soul. And so this is also about developing that trust in him, to follow him. And as you become obedient or practice obedience, then you'll also get the Supreme Soul's blessings. And the Supreme Soul's blessings enable you to become light and move forward. So the easy way to keep moving forward and be in the stage of ascent is to follow Srimat. The third method that Baba is sharing with us is to learn to be a master and a child. When we work together, we sometimes can give our opinions, and then when something is decided, we need to go with it. And it's this balance that's going to enable us to be happy and also to make others happy. So in this way, Baba's teaching us how to transform ourselves so that we move from being weak to becoming powerful once again. Today's blessing is also on that theme. Baba is saying, keep yourself busy. Make a timetable for your mind and intellect so that you are actually using your thoughts and time in a worthwhile way to make yourself powerful. Baba is saying today that even 1 second of lack of attention, lack of busyness, and the mind and intellect are drawn towards waste, drawn towards vices. So
we have to continually keep ourselves internally busy. Om Shanti.